अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिसेस किस टाइप की हैं। आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। फर्स्ट इज दिस 0 0 0 0। हमने अपने इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं जो एलिमेंट्स कंटेनिंग जीरो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। सो दिस इज द नल मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स। null matrix. Now B, this is so A is the null matrix. अब B को देखें, B is equals to 2 3 4। अब इसकी अरेंजमेंट पे जाना है हमने। फर्स्ट थी हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास जीरो है, वो डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि जीरो है, तो दिस इज नोन एज नल मैट्रिक्स। अब मेरे पास अगर ये मेरे पास इस तरह होती है रो, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, सही है। अब अगर मेरे पास जो मेरा मैट्रिक्स है इस रिप्रेजेंटेशन में है, इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, और इस रिप्रेजेंटेशन में है तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सो जिसमें मेरे पास ओनली वन रो है, ओनली वन रो, वो होगी मेरे पास रो मैट्रिक्स, और ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। सो मेरे पास कितनी रो है इस केस में? वन रो है और थ्री कॉलम्स हैं, सो इट्स नोन एज अ रो मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास होगी रो मैट्रिक्स होगी। नाउ इन द सेकंड सी केस में देखें, मेरे पास कॉलम कितने हैं? वन, एंड दी रोज आर वन टू थ्री। जब मेरे पास वन कॉलम है, सो इट्स नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। नाउ इन डी पार्ट में देखिए, मैं डी इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब देखिए कि सिर्फ ये क्या है मेरे पास? डायगोनल इंटिटीज है, डायगोनल इंटिटीज पे एलिमेंट्स है। सो ये मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स की कोई टाइप होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब सेकंड क्या देखना है कि जो मेरा डायगोनल है इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है, यानी कि वन है। अगर मेरे डायगोनल पे वैल्यू वन है, इट्स नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये जो टाइप है मेरे पास, इट्स नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ई इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमें सिंपल पता चल गया कि अगर हमारे एलिमेंट के अंदर जीरो है, अगर हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स जीरो है, इट्स नोन एज नल मैट्रिक्स। एंड एफ इज इक्वल टू 5 6 7, इसमें मेरे पास क्या है? सिर्फ एक ही कॉलम है, इट्स नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की एंडिंग हो रही है जिसमें ए बी सी डी ई और एफ, ये हमने एफ तक मैट्रिक्स सॉल्व किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आल्सो आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई किस तरह करना है? इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब देखें इसमें क्या है, मेरे पास ऑर्डर देखना है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में कितने नंबर ऑफ रोज हैं? टू नंबर ऑफ रोज हैं, एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 एंड 3। तो मेरे पास ऑर्डर जो बन रहा है वो है 2 क्रॉस 3। अब देखें 2 क्रॉस 3, मेरे पास नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट्स नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ इन सेकंड केस, only one column, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, when there is one column it's known as a column matrix। so ये मेरे पास क्या आ जाएगा? एक column matrix आ जाएगा। in this case मेरे पास number of rows कितनी है? 1 and 2, that is 2 cross, and number of column 1 and 2, so the order is 2 cross 2, so it's known as a square matrix। जब मेरे number of rows are equals to number of column, it's known as a square matrix। इस केस में भी number of rows and number of column order क्या है? 2 cross 2 का, it's also known as, it's a diagonal entities। ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। फर्स्ट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले मेरे पास आ जाएगा दैट इज कि ये मेरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो मेरी बड़ी जो है फर्स्ट। उसके बाद आप देखेंगे जो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बिकॉज कि सिर्फ डायगोनल पे मेरे पास एंटिटीज है, सो इट इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ थर्ड क्या देखना है कि इसकी एंटिटीज, इसकी जो डायगोनल एंटिटीज है वो सिर्फ वन है। सो ये मेरे पास जो एट द एंड इट्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इन दिस केस जो सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट, देन इसकी जो एंटिटीज हैं सिर्फ डायगोनल पे हैं, सो
numbers are only in the diagonal, so it's known as diagonal matrices. और अगर सिर्फ मेरे diagonal पे 1 है तो it's known as identity matrix. In the 4 में चेक करें number of rows कितनी है 1 2 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं 1 2 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 number of rows are not equal to number of column. No, so it's known as rectangular matrix. So it's known as rectangular matrix. अब ये देखिए सिर्फ 1 रो तो इट्स अ रो मैट्रिक्स कॉलम इज 1 इट्स नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स. अब इस केस में देखिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 3 क्रॉस 3 सो इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इस केस में देखें मेरे पास ये अब देखें इसमें ऑर्डर पहले चेक करना है दैट हैज कॉलम 2 है लेकिन पहले रोज लिखते हैं 1 2 3 so the matrix is 3 cross 2 that is this is rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर हम इसको बड़ी रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं दैट इज कि हम अगर इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं रेक्टेंगुलर विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर तो ये मेरे पास होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब सेकेंडली क्या है कि ऑल द एंटिटीज आर जीरो सो इट्स आल्सो अ नल मैट्रिक्स. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो रहा है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन. नाउ दिस आइडेंटिफिकेशन is solely depends on diagonal matrix. Depends on diagonal matrix. अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके सिर्फ डायगोनल पे एंटिटीज यानी कि डायगोनल पे वैल्यूज हैं और बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो जीरो हैं. अब इस केस में देखें सिर्फ डायगोनल पे वैल्यू है बाकी एंटिटीज जीरो हैं. अगर मेरे डायगोनल पे इफ डायगोनल मेरा डायगोनल जो है डायगोनल equals to k mean constant, k means constant. कांस्टेंट में अब मेरी वैल्यू कहां से 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. अगर मेरी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. दैट इज स्केलर मैट्रिक्स. अब सारे केसेस वन इज स्पेशल केस. अगर मेरी वैल्यू 1 है इट्स नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर मेरे डायगोनल पे डायगोनल एंटिटीज 1 है तो इट्स नोन एज आइडेंटिकल मैट्रिक्स. अदरवाइज अगर 2 है 3 है 4 है और रिपीट है और कांस्टेंट है इट्स नोन एज स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल इन दिस केस 4004 entities are 4 and 4 that is constant is a scalar matrix. Yes, it's a scalar matrix. Then in second case 2 minus 1 अब देखें 2 minus 1 are not the constant not 1 so it's a diagonal it's diagonal matrix. Now in C 1 1 it's a that is identity or unit matrix. 3 0 it's a diagonal matrix and 5 सबसे पहले जहां ऑपरेशन आएगा इसको हमें सॉल्व करना है that is 2 0 0 2. अब जो हमारी डायगोनल है उस पे एंटिटीज सेम है so it's known as a scalar matrix. So the answer is a scalar matrix. Now in question number 4 negative of a matrix. Negative of a matrix mean by multiplying matrix with its conversion. For example, if I have positive sign it's converted into negative. If there's a negative it's converted into a positive sign. In this case a is equals to 1 0 minus 1 so its negative will be minus 1 0 plus 1 that is a negative. And 3 2 minus 1 1 so it's equals to minus 3 minus 2 plus 1 and minus 1. In this case the negative is this one. And d for example it's equals to minus 3
2 minus 4, 5, that equals to D. So the negative of D will be minus of minus 3 minus 4, 2 and 5. So the answer is 3, 4 minus 2 minus 5. So this is the general representation. All the questions are done in the same pattern. So this is the end of the question number 4. Now in question number 5, find the transpose. Transpose mean the interconversion of rows into column or column into rows. So ये आपने बेसिकली याद रखना है कि रोज को कॉलम में तब्दील करना है और कॉलम्स को रो में तब्दील करना है. First case, a equals to 0 minus 0 1 minus 2. So the transpose सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, that is a of t. A of t is the general, t is the general representation of transpose. अगर यहाँ पे a है तो a of t होगा, b है तो b of t होगा. A of t equals to 0 1 minus 2 and the whole transpose. So the value will be equals to, so this is a column converted into row. So it equals to 0 minus 0 plus 1 minus 2. That is the value. In case b equals to b 5 1 minus 6, so it's converted into a column. In this case, in this major case, that is 1 2 3, that is the part C. 2 minus 1 0. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में. सो जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 2, second will be is 2 minus 1 and third will be 3 0. So this is the answer. This is the required answer. D equals to 2035. D equals to 2035. So this is a row. Row will be converted into a column. That is 2 3 and this is 0 5 0 and 5. So this is the required answer. So जितने पार्ट हैं ये सारे इस तरह रिपीट होने हैं हमारे पास. That is F12 will be 1 2 and 3 4 converted into a column, that is 3 4. This is the end of the question number 5. Now the most important question of this exercise is question number 6, the verification. This is the question part 1. इसमें हमने प्रूव करना है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, A इक्वल्स टू, आई नो दैट A इक्वल्स टू 1 0 2 1. Now taking transpose, A transpose will be equals to, this is a row converted into a column, 1 2 0 1 0 1. Then we have to find A transpose of transpose, that is A
ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इस ट्रांसपोज वैल्यू को जो हमारे पास आई है इसका दोबारा हमने ट्रांसपोज लेना है। अब इसका ट्रांसपोज किस तरह, दैट इज इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1 whole transpose. Now converting this into 1 0, converted into a column 1 0 2 1 2 1. So A transpose of transpose equals to 1 0 2 1. Now the second step, how we have to prove A transpose of transpose equals to A. What is the value of A? A value is this one. So this value equals to this. So hence proved that left hand side equals to right hand side. Now in the second part, we have to find or prove that B transpose of transpose equals to B. Firstly, B equals to 1 2 1 0. Now first we have to take the transpose. B transpose equals to 1 2 1 0 transpose. Now the value of B transpose equals to, this is the row is converted into a column, so it's equals to 1 1, and this is the row, it's converted into 2 0. This is the major part. यहाँ पे आपने सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी कि पहले कॉलम और पहले रो, दिस इज मैन कि सबसे पहले रो को कन्वर्ट करना है हमने, रो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम फर्स्ट. Now the next step is to find the B transpose of whole transpose, that is B transpose whole transpose. So how to find the value of B transpose is 1 1 2 0 whole transpose, then this value equals to this, so it's equals to 1 2 row, so 1 2 1 0 1 and 0. This is the value of B transpose whole transpose. So this value equals to the value that is B, which is this. So hence it's proved that left hand side equals to right hand side. This is the major two questions of this, that is A transpose का whole transpose equals to B. So remember also objective के अंदर ये आता है कि what is the value of this. So याद रखिएगा A transpose whole transpose अगर objective आता है must be equals to A. In other case column D transpose whole transpose must be equals to D, because अगर हम एक बार उसकी ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसके बाद सेकंड टाइम उसको ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू द ओरिजिनल वन. इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. इसकी जगह हमारी कोई भी ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है. हमेशा टू रिमेंबर, दिस इज द मेन पॉइंट, this is the major point to remember, that the transpose and transpose of a matrix must be equals to its real one, and the value may differ.
So this is the end of the lecture number 1.2.